So we should start. It's a little new topic today. It may be a new topic for a lot of us, maybe, or some of us may have heard or read a little bit about AI. Okay, so what is AI? AI is artificial intelligence. Artificial intelligence क्या होता है? Artificial intelligence is, we are going to talk a little bit. Think of it, artificial intelligence is a very big, very complex topic, and we may have seen versions of AI in some movies or in some scientific sci-fi movies. How many of you have seen the movie Iron Man? So in some of the nice sci-fi movies, they have shown some version of artificial intelligence. Think of it like a robot doing the task for you. That's how we imagine it, basically. Actually, robots have been doing some tasks uh, by now, but let's understand. So what is AI? AI is the most important general purpose technology of our era. Most important because this is where the breakthrough is going to happen. And this is where we have reached. Current technology or current technology in AI is said to be the second wave in machine learning. So we are almost in the second wave of machine learning. AI is also basically disruptive technology. Disruptive technology is like which basically disrupts the whole system. ठीक है. तो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे एआई के बारे में, जस्ट हाई लेवल में बताता हूँ आपको. तो इट इज डेफिनेटली बूमिंग. सो एआई यूसेज, एआई क्रिएशन ऑफ एआई में जो जो कंपोनेंट्स लगते हैं, लाइक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड सो ऑन, वो बढ़ रहे हैं. ठीक है, पीपल आर अडॉप्टिंग इट. देन a variety of AI technologies are in use, as I already said, machine learning and deep learning. Deep learning uses neural networks and other versions of AI for, let's say, image recognition, है ना, or shape recognition, or things like that. They are also booming. Then AI is being applied to various business purposes currently, not just a specific domain, but they are being applied everywhere from computers to robots to automotive industries to marketing data analysis and to operational processes and to even enhance the products and services and support of various companies. So there are high-tech firms in automobiles, advanced manufacturing, and all other kinds of domain. They are using AI. They are using robotics. Robotics is one branch of AI, let's say. Okay, then what are the other basic things about AI that we need to know before we get into more topic? Is that many large companies are now creating their infrastructures. So for example, companies like Google, Apple, Facebook, and Amazon, they have invested a lot in the AI infrastructure already. And they are creating their models. They are supporting their models on the clouds. So a lot much of infrastructure and investment has been done. Then some companies are finding success by focusing their AI efforts in certain areas. तो इसमें कुछ लोगों को benefits भी मिला है. Like the companies who are applying AI, some of them are mature enough to do more experiments by now, so that उनको कुछ benefits भी मिलेंगे. AI use करके some companies are finding better productivity, better processes, better results in certain areas. ठीक है, हम बेसिक पॉइंट्स पहले समझ रहे हैं कि एआई के अराउंड क्या होता है, व्हाट इज एआई. तो कोई हाई टेक कंप्यूटर सिस्टम है, या कोई रोबोट की बात कर रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. ठीक है, एआई ओवरऑल हम टेक्नोलॉजी को बोलते हैं. रोबोटिक्स इज वन ब्रांच ऑफ इट. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड डीप लर्निंग इज वन ब्रांच ऑफ दिस. मशीन लर्निंग इज वन ब्रांच ऑफ एआई. एआई इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स technology. ठीक है, AI hasn't, another point about AI should be, AI hasn't transformed business yet. So there are no very radical shifts that we hear about AI. कि जैसे someone will book a car someday, open a Uber and call a driverless car, और फिर वो driverless car को बताओ कहाँ जाना है और वो आपको लेके जाएगा. So this is not very near future yet, at least for the next 10-20 years. तो इतना progress नहीं है, but yes, definitely in some minor business processes, like we will see some of them, there has been improvements in AI.
there is some impact on employment, but jobs may change. Then implementing AI also raises ethical questions. Okay, there are some issues with AI, as we will see. So these are some of the basic guidelines about AI. Now we'll get into the topic. So in the topic, we will just understand what is AI with the help of this beautiful presentation here, and we will see what are the risks and limitations, and we will see how is the future look like, or what the companies are doing currently, or what the progress has been. तो कुछ नहीं पता होगा तो भी there is no worries, don't worry, just pay attention and it may give you some insights into what is AI overall, or how to use this. We as a company haven't got there yet, but yes, in near future, this will become a requirement for every company. I think it has already become based on the data. So those who are not catching up with AI may even get late results or may get eradicated. So AI is very important to understand for future business perspective. तो थोड़ा सा हमने देखा और थोड़ा हम लिखते हैं. So pay attention to this interesting topic. Or let's see. Okay, AI. Now, what is definition? What is AI? AI is automation on steroids. For example, AI is heavily automation doing on nitros and steroids. You can think like that. It's a heavy automation work. Then fundamentally different approach from coding. Okay, as a programmers, some of us here are programmers. We understand code, so we know what is code. Code, we have some input. We write the instructions as a set of code instructions, and then we code it into the machine, and the machine then follows the code to take the input and gives us the output. तो समझो किसी ने function लिखा है to add two numbers, then that's your code, right? You pass number one, you pass number two, the function is called, which is code in the machine, and then the machine returns you the output. तो ये coding approach होता है. AI में ऐसा नहीं होता है, machine learning में ऐसा नहीं होता है. Machine learning is a completely different approach from coding, as we will see. In this, you're not giving machine the input and the programming instructions. In this, you're giving machines input and output both, and then the machine will start predicting the laws, start predicting the code, start predicting the process of identifying something on its own. So the machine will be trained on data, actually. Okay, we'll see. But this term of artificial intelligence was coined by John McCarthy, the scientist here, name is given, in 1955. He was a math professor in Dartmouth University. So he created this term called as artificial intelligence in 1955. So you see, it has been invented. The term was invented quite a long time ago. It's almost 70 years earlier. Then biggest advances are in today are in perception and cognition. Perception and cognition क्या है? Perception and cognition are two very subtle processes of our brain where you perceive things, where you imagine things, where you are cognitively aware of your surroundings or your topmost area of the brain, which is called as prefrontal cortex or cortex, that takes care of most of the cognition. Okay. Computers have been just following the instructions in terms of coding, and in terms of machine learning, machine learns from the data points and then gives us the correct answer when questions are asked, when the machine model is trained. ठीक है, तो ये just basics है. Let's see further. So you see some of the adapters of AI. This very nice list of companies here, all powerful companies here. So they have been doing a lot of AI. You see PayPal here, you see Google here, JP Morgan, even lots of educational companies like Udacity, Coursera, and Upwork, and business companies like work-related companies like Upwork and LinkedIn, and heavily internet-based companies like Google and Apple, and even hardware companies. Salesforce is a big name. So all of these companies have heavily invested in AI, and they have achieved a lot. And they are quite heavy users of AI, and they have their own frameworks,
Basically, Google has developed a lot of frameworks that we can use, even open source, to develop machine learning models. Okay. Then what happens further? So, ठीक है, AI में और क्या होता है? So there are various kinds of models in AI. There are supervised learning systems. There are reinforcement learning systems, and humans for us, for example, are unsupervised learners. तो तीन तरह के लर्निंग सिस्टम्स हैं यहाँ, ठीक है? तो जैसे मैं बता रहा था ना कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड इट विल मेक थिंग्स क्लियर. लेट्स से देयर आर सेट ऑफ इनपुट्स x एंड आउटपुट्स y. ठीक है, x पे समझो एनिमल्स हैं, डॉग कैट्स हैं, और इनपुट्स माइट बी द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड आउटपुट में बी लेबल्स. तो समझो एक पिक्चर्स हैं एनिमल्स के, डॉग्स एंड कैट्स एंड फॉर एग्जांपल, then every picture will have a label. You see the picture and you give it a label, it's a dog. Then second picture, you will see the picture and then you give it a label, it's a cat. ऐसे करके आप क्या करोगे, आप millions of pictures को label करोगे. You will have thousands and millions of pictures of dogs and cats which you will label correctly, and then you will pass that data to the machine. Okay, and then the machine will learn from the data based on your data model, based on your machine learning model. The machine will study that data. आप जो million images pass करोगे machine को with the correct output labeled properly, like whether it's a dog or a cat or whichever animals you are analyzing, उस पे machine will study and will learn from that model. Once that model is trained, as it is called in machine learning language, it will start giving you correct answer. Then once the model is trained, that you can use that model to show new pictures, and the machine will recognize whether it's a cat, whether it's a dog. That's machine learning. Very simple example. तो आपने क्या किया, एनिमल्स का लिस्ट लिया, पिक्चर्स लिया और उसको लेबल लगा दिया करेक्ट बाय ह्यूमन नॉलेज, एंड देन यू गिव इट टू अ मशीन, यू गिव इट टू अ मशीन लर्निंग program, and then the program will learn from this data called as to be trained. Once it is trained, it should fairly be able to predict answers with a high rate of accuracy. तो once the model is trained, आप क्या कर सकते हैं, आप उस मॉडल को नए पिक्चर्स दिखा सकते हैं, और फिर वो मॉडल आपको बता सकता है कि ये पिक्चर डॉग का है और ये पिक्चर कैट का है. By studying so many data models, it will create its own learn. ठीक है. Now this is just one simple example. The machine learning can be used for, let's say, one example is disease prediction in plants or even in humans. तो समझो ह्यूमन डिजीज प्रेडिक्शन मेडिकल एनालिसिस के लिए भी यूज होता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस. दिस इज जस्ट वन सिंपल एग्जांपल आई गेव. ठीक है, सो टू गिव इट, to give you a flow, to give you a context of how it is different from coding. ठीक है, coding is different where we code the instructions and we give input, the machine gives us output. In this case, we give input and output both to the machines with correct labels, so that machine gets trained on the data, and then machine is able to predict, or your program is able to predict the correct output based on the data. That is called as supervised learning system. Supervised में क्या होता है? Machine will be supervised by a human, will be given a data to be trained on. Then what is reinforcement learning? Reinforcement learning is a little bit more बाउंड्री के सिनेरियो, जहां पे आप मशीन को थोड़ा ज्यादा इनपुट देते हैं, नॉट जस्ट द इमेजेस विद टैग्स मे बी फॉर एग्जांपल, बट लेट्स से you will basically give the current state of the system, you will give the goal, then list of allowable actions and describe the environment. तो आप सारे कंस्ट्रेंट्स ये सिस्टम को बता देंगे. आप बोलेंगे गोल क्या है मेरा, ठीक है, ये मेरा डेटा है, ये मेरा गोल है, these are the allowed actions for the machine and these are the elements of the environment to consider. ये करने के बाद the machine will reach that goal as close as possible. That is reinforcement learning. ठीक है, supervised learning होता है, reinforcement learning होता है, unsupervised learning होता है. Unsupervised learning is like humans. We, without fair knowledge or without fair in deep description, we are quickly able to recognize. For example, humans can recognize a tree or recognize a cat or a dog very easily with little or no labeled data also. That is unsupervised learning. Machine learning is not able to do much progress in the unsupervised learning system, which should be a breakthrough if this happens.
तो अनसुपरवाइज में मशीन ट्रेनिंग हो कर सकेगी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मशीन लर्निंग के लिए. करेंटली आई थिंक इट्स सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट बेस्ड व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है. तो डोंट गेट दिस थिंग. इट इज अ जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी. इट्स यूज्ड फॉर automating processes and helping the business in different ways. The term came 70 years ago, but there has been less progress so far. Current wave can be called as the second wave of machine learning. There have been significant users. These significant users have been these big companies, and there are certain learning categories that we learned so far. ये दो तीन तरह से मशीन लर्न करते हैं. तो और देखते हैं हम, एंड देन वी विल सी. ठीक है. तो कैटेगरीज हमने देखा. देन वी विल लर्न अबाउट दिस वेरी नाइस बेसिकली पैराडॉक्स. ठीक है. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट called as Polanyi, Michael Polanyi. Polanyi gave a paradox. He was a computer scientist. He was a maths professor and a philosopher. In 1964, he gave this paradox. What is the paradox? The paradox says that we all know more than we can tell. है ना. हम बहुत ज्यादा समझते हैं, जानते हैं, बट हम बता नहीं पाते उतना एज ह्यूमंस हमसे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे समझो आपको कोई बंदा मिलता है और वी कनेक्ट टू पीपल, वी टॉक टू न्यू पीपल, वी सी न्यू फेसेस. तो हम फेस देख के झट से हजारों चीजें देख लेते हैं, है ना. बालों का शेप देख लेते हैं, चेहरे पे कैसा है, आपको मूड भी पता चल जाता है पर्सन का. आईज से आपको कुछ कुछ पता चलता है ना. गुस्से में है, चेहरे का कलर क्या है, फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये काफी सारी चीजें आप देख लेते हैं. बट अगर कोई बोलेगा अरे तुम लिख के बताओ ये सब कोई बोलेगा कि आप किसी से मिलते हो तो क्या क्या नोटिस कर लेते हो या क्या नोटिस हो जाता है फेस देखकर, तो ये लिखो किसी पेपर पे, देन वी विल ऑल गेट इनटू अ प्रॉब्लम. थिंग इन अ लॉ, इन अ प्रिंसिपल. उसने बताया कि वी ऑल नो मोर देन वी कैन टेल. तो इसका साइंटिफिक इम्प्लीकेशन में बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस में इसका. मशीन लर्निंग इज ओवरकमिंग दीज लिमिट्स स्लोली. ठीक है. तो that's why it is also very difficult to code the machines in such a way because we know more than we can tell. तो अगर हमें पता है बहुत ज्यादा और हम बता नहीं सकते उसको, then it's very difficult to come out of rules and laws to basically code it or to put it into a machine. तो मशीन को कैसे बताएंगे, right? So on. So it has a very big implication on the machine. So this scientist gave this paradox. Then let's see some limitations. What are the limitations? What will the limitations be for machine learning? Is that they can hardly be able to, machine learning models or MLs can hardly ever replace the entire job or the business model or a process. Most often they will only complement human activities. तो ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है, और ह्यूमन जो प्रोसेसेस कर रहे हैं उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए है. एंड देयर आर सम लॉट्स ऑफ ऑटोमेशंस दैट कैन हैपन इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. व्हाट आर द रिस्क्स एंड लिमिट्स? मशीन्स हैव देयर ओन हिडन बायसेस. ठीक है. फर्स्ट देयर आर three risk basically. One risk is that machine have its own hidden biases in the data. Because आपने कुछ डेटा दिया है मशीन को, अगर उस डेटा में कुछ फ्लॉज है ना. समझो मेरे को डॉग और कैट वाला ही एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. तो जल्दी समझ में आ जाएगा. तो डॉग और कैट का मैंने एग्जांपल बताया था कि यू गेव अ लॉट ऑफ डेटा टू द मशीन, 1 million more pictures, let's say, and you gave pictures of dogs and cats, so that machine should be able to train on it. Suppose your data is flawed in the sense उसमें से बहुत सारे pictures dog और cat के है ही नहीं, horse के हैं and it is labeled as dog. तो क्या होगा आपको पता? तो machine will start understanding a horse also as a dog, and then also a dog also as a dog. Maybe a horse is a bigger dog and dog is a smaller dog. So the results may be affected. Correct? So data flaw will be reflected in the machine. So that is one big risk with this machine learning, that machine may have their own data biases. Second risk is that unlike traditional systems which are built on logic rules, logic this to logic that, machine learning models have a lack of verifiability. क्योंकि ये reverse engineering है इसमें, तो इसको verify करना बहुत difficult है. क्योंकि ट्रेनिंग डेटा से ट्रेनिंग किया आपने और फिर वेरीफाई नहीं कर पा रहे. दैट इज वन प्रॉब्लम. कोड के केस में कैसा है? इट्स डायरेक्टली वेरीफाइबल. यू नो व्हाट इंस्ट्रक्शंस, यू नो व्हाट इज द इनपुट, यू नो व्हाट द आउटपुट शुड बी.
ठीक है. In case of mission critical applications, this become a problem because you cannot verify, lack of verification. Then third risk and limitation with this would be, as the machine learning makes errors, it is almost difficult to diagnose and correct it because there is lack of verification. Once the error happens, which definitely does, every machine, every program makes errors, right? तो machine learning models में भी errors होते हैं, bugs होते हैं, limitations होते हैं और issues होते हैं. तो ये जब issues आते हैं, then it is very difficult to diagnose and find the correct root cause. Why? Because there is lack of verification. ठीक है. Then this, I think we already talked about this. Next slide, in limitations together. Machines have hidden biases. I talked about this. Then deal with statistical truths rather than literal truths. Lack of verifiability. तो लिटरल ट्रूथ्स नहीं है, स्टैटिस्टिकल ट्रूथ्स है, क्योंकि डेटा गिव्स अ स्टैटिस्टिकल पिक्चर टू द कंप्यूटर. आपने डेटा दिया कंप्यूटर को डाल के, है ना, 1000 एक्सेल शीट्स दिए. एक्सेल शीट्स में कुछ डेटा है, देयर आर सम कॉलम्स with some data and there are some other columns with some other data. Based on this data, a statistics is created, like what is the range of values, what is the total count of values, what is the mean, median, variance, standard deviation and so on. तो इस statistical truths are not real truths. इसकी वजह से क्या होता है, lack of verifiability हो जाती है. ठीक है. Then error diagnosis and correction is extremely difficult. These are some of the risks associated with this industry. Now we saw what is AI basic. We understood some key points about AI. We saw how they should complement humans. And now we saw some risks associated with this industry. ठीक है. अब हम थोड़ा सा adoption देखते हैं कि क्या हो रहा है AI में. What people are doing. It's very nice thing to understand. तो why it is important to talk about AI? कोई बोलेगा यार ये हम कर नहीं रहे, इसके बारे में क्यों बता रहे. तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, या इसका क्या फ्यूचर होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, और टू अदर कंपनीज एंड टू अदर आईटी कंपनीज, टू अदर प्रोडक्ट कंपनीज एंड सो to other businesses in general, not just computer companies, but all kinds of industries, as I said, about automotive, about medical, and about batteries, and about scientific and medical, and so on. So, why adoption is important quickly? Because late adopters may never catch up. Because the market is already skewed in the sense 80% of machine learning, 80% of data analysis, 80% of data infra is already there with these big companies that we saw. Apple has its own cloud. Apple, Google, Facebook, Microsoft, they are heavily chasing each other, Salesforce, in this era, in this AI field. So the late adopters may never catch up because these guys are already quite far ahead and they have taken things too far down the line, as we will see. It's a knowledge coding problem. As I said, it's not a simple coding, it's a knowledge coding because you have to transfer your knowledge to the computer, है ना. कंप्यूटर देखो, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपने गेस्ट्स को इनविटेशन दिया है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी ने शादी का इनविटेशन बांटा है या बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया है, तो आप डोर पे खड़े रहते हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं वेलकम वेलकम वेलकम, राइट. और आप उनको तुरंत पहचान जाते हैं और उनसे हाय हेलो करके देन यू अलाउ देम इनटू द पार्टी. तो ये चीज अगर कंप्यूटर को ट्रांसलेट करना हो, ये नॉलेज, कि आपको रोबोट खड़ा करना है आपके घर के बाहर, एंड बेसिकली द रोबोट हैज टू आइडेंटिफाई द गेस्ट्स एंड शेक हैंड्स अप्रोप्रिएटली एंड ग्रीट देम एंड देन अलाउ देम टू द पार्टी, और not allow some of the guests to the party which have not been invited. तो ये सिंपल सा टास्क है जो ह्यूमंस फ्लॉलेसली कर लेते हैं, बट रोबोट्स को बताने में बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज इट्स अ नॉलेज कोडिंग प्रॉब्लम. वी नो मोर देन वी कैन टेल. हमने पढ़ा, राइट, हमने पैराडॉक्स पढ़ा कि हमें ज्यादा पता है लेकिन हम ज्यादा बता नहीं पाते. वी ऑल नो मोर देन वी कैन टेल. वी नो 1000 थिंग्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग अ फेस, but when we write them down we will not be able to talk about 5 things, let's say. And we can swim effortlessly, but to teach someone to swim in terms of instructions, it will be very difficult. We do 1000 things automatically, but when we write them down we don't know how we do. It's a problem, right? So it's a knowledge coding problem in machine that takes times to discover, disambiguate, and deploy knowledge. It's not a code deployment. It's in a way it's basically knowledge deployment because you are giving a lot of data points for machine to look upon. Plus, since there are millions of data points,
you need lots of processing power also. So it cannot be done in very simple computers. Cannot be done in very normal RAM and storage stuff, right? Then what about adoption? Redesign of business processes required. Human tasks. तो अभी कुछ चीजें human करते हैं, कुछ computers करते हैं. We need a redesign of that. How AI will change this. Alphabet is nothing but Google. See, it's basically Google's parent company. Alphabet के under there are hundreds of Google's companies like Google Maps, like Google Routes, Google Cloud, and so on. But Alphabet is the parent company of all. So Alphabet is nothing but Google. ठीक है, so it needs no introduction. So there is a fact given here. We can see tech companies like Alphabet have 2,700 AI projects underway in 2015, and this is just an old data. अभी 22 चल रहा है. ये 7 साल पहले की न्यूज है, 7 साल पहले का अपडेट है. Alphabet was already working on 2,700 AI projects at that time in 2015. It's 2022. You can imagine they may be working on millions of projects now, I think. But the idea is to give you a fair advantage of how soon companies should adopt, because a lot of work is already happening in case of AI. किसी को सुन के ये भी लगेगा अरे ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है या ये नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी. So especially these names that we saw, Google, Alphabet, and Salesforce, and all these guys are doing a lot of heavy lifting in AI because it needs a lot of investments also, because it needs lots of processing power on the cloud. ठीक है. So what is adopting AI? Adopting AI is a little difficult, but late adopters may never catch up. So it's a race there, and as well as it's complex because it's a knowledge coding problem. Google and these companies are already leading. Now 3 core questions related to AI. कोई पूछता है कि क्या होता है AI या कि कौन से 3 क्वेश्चंस होते हैं, हम देखते हैं. One core question is how does it work? तो जैसे समझो हम AI शुरू करेंगे समझो अपने कंपनी में या यहाँ पर, तो we should be, all of us at basic should have knowledge of at least these 3 things. कहाँ से शुरू कर सकते हैं? Definitely we will start with the project, obviously, AI based project जहाँ पे डेटा होगा एंड जहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे, जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट होगा, एंड we'll do some things on the data. But essentially these 3 questions should be known to everyone in a company working in AI. Working in AI मतलब solely AI पे होगा ऐसा, again don't get me wrong, company could be doing anything, but AI में parallelly they may be investing or researching. So they may have an AI department or they may have a machine learning based system or so on. That is called as working in the AI. ठीक है, तो कोई साइफाई रोबोट्स बनाएंगे, ऐसा कंपनी बनाएंगे, दैट इज एआई? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एआई इज रिसर्चिंग ऑन एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स और एडवांस एआई and doing research on that whatsoever you may be doing as your line of business. You could be a banking company, it could be a manufacturing company as we saw, it could be a medical company, it could be a scientific company, it could be Pentagon, but they may be using AI power or AI technology to fuel their business processes. ठीक है. So first let's get this right. What is AI company? Then how does it? So 3 questions होते हैं, हम उनका तीनों का सिंपल का क्वेश्चन भी देखते हैं, and we'll see how they are important. How does it work? First question. Second question is what is it good at? And third question is what should it is not good at, or what should it not do, or what should it never do. तो एक एक करके हम देखते हैं. How does it work? तो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हमें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है. जैसे हमने बताया, इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स क्वेश्चंस. मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई क्या होता है? इट बेसिकली एट वेरी सिंपल, इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. जैसे डेटा का एग्जांपल मैंने बताया था, यू गिव अ मिलियन पिक्चर्स ऑफ डेटा एंड द मशीन विल देन बी एबल टू स्टार्ट फाइंडिंग who is dog and who is cat based on looking at the picture, based on the data knowledge that it gained. So at very basic, first question, how does it work? It processes information and answers questions. Or simply put, और ऐसा भी बोल सकते हैं, essentially the machine learns. Hence we call it machine learning. Machine learning क्यों बोलते हैं? क्योंकि machine is actually learning from the data and able to answer the correct questions. ठीक है. और क्या होता है इसमें? ट्रेन टू स्पॉट पैटर्न्स इन डेटा. तो आपने डेटा दिया है तो उसमें पैटर्न्स भी वो सॉर्ट देख पाता है, मशीन देख पाएगा. फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा है तो वो देख सकता है कि सेल्स ऊपर जा रहे हैं, बुलिश है, बेरिश है. स्टॉक मार्केट का डेटा है तो बुलिश बेरिश वो बता पाएगा. ट्विटर का डेटा है तो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है उसमें कि द जनरल सेंटिमेंट अबाउट दिस
न्यूज और जनरल सेंटिमेंट अबाउट दिस एक्ट्रेस और जनरल सेंटिमेंट अबाउट दिस मूवी कैसा है लोगों का, तो वो भी एनालिसिस मशीन लर्निंग में होता है. मशीन लर्निंग, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट वर्क? इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. देन व्हाट इज इट गुड एंड व्हाट इज इट नॉट गुड? दो क्वेश्चन और है. व्हाट इज इट गुड? इट सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग डेटा and give answers with clear parameters defined by data scientists, typically speaking, or programmers. Programmers or data scientists will define the parameters and provide the data to the machine. That machine will then learn from and give answers. That is what machine learning system does. That's what it is good at. That's what we should expect from it. ठीक है. And what is it not good at? हमने कुछ पहले भी देखे थे. Limitations, right? Limitations and risks. What is the limitation and risk? It cannot understand the biases data reveals, nor the consequences of the advice given. तो मशीन को ही बोलता है कि ये स्टॉक को बेच दो, आपका सेंटिमेंट एनालिसिस देखा, स्टॉक डेटा देखा, उसने मार्केट प्रेडिक्शन देखा और आपको बोला ये स्टॉक को बेच दो. तो वो बेचने से what importance or what consequences will happen on you or your financial situation, that machine doesn't understand. So we can understand that machine has these some limitations. What is it? It cannot understand the biases in the data because it is training on the data. तो उसको पता नहीं चलेगा डेटा में जो लूप होल्स हैं वो. और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडवाइस भी उसको समझ में नहीं आएगा. मशीन से जो आपको आंसर आएगा, जैसे मैंने डॉग कैट हॉर्स का एग्जांपल बताया था पहले, आई से इट अगेन टू मेक इट मोर क्लियर. तो अगर डॉग के पिक्चर्स में हॉर्स के पिक्चर्स भी इंक्लूड कर दिए आपने और डेटा में डाल दिया, तो machine will start predicting horses as dogs also. And also it doesn't know the consequence of what will happen. So that is some limitation that machine learning doesn't do, so that we shouldn't expect from it. Okay, so these are some basic questions for non AI folks like us who don't know much about AI should be able to answer these simple questions. How does AI work? How, what it's good at and what it's not good. Okay, now we are getting into, perhaps we are almost going to close it off quickly. There's not much now, so just pay attention. We'll see some future. What's going on, what may happen in the future, और क्या हो सकता है, क्योंकि एआई को लेके जितना भी क्यूरियोसिटी है ना लोगों को, एआई को लेके जितना भी नॉइज है वो फ्यूचर को लेके है. क्योंकि हम सब साईफाई मूवीज में देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यूटोपियन माइंडसेट सेज मशीन्स विल टेक पावर एंड ऑल दैट. हमने ऐसे बहुत सारे मूवीज कुछ लोगों ने देखे भी होंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज बेस्ड ऑन एआई नाउ. तो उसमें बहुत सारा वो एक्स्ट्रा वैगेंटली दिखाते हैं, तो हम लोग फ्यूचर के बारे में क्यूरियस हो जाते हैं. सो दिस इज मे बी समथिंग इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी व्हाट एक्चुअली देयर इज. तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कोलैबोरेशन होगा मोर. Instead of we getting completely utopian machines taking control of everything and basically defeating humans, and in the movies like Terminator or iRobots and all that, it's more of collaboration that will happen. So humans and AI are joining forces, you see. जैसे मैंने बताया कि पहले कि machine learning models will help to complement human processes, not replace them. तो पूरा चेंज पूरा रिप्लेस हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट देयर विल बी प्रोसेसेस व्हेन एआई विल बी हेल्पिंग अस. ठीक है. ह्यूमंस असिस्टिंग मशीन्स अपोजिट, जैसे हमने देखा था री एनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल या फिर सुपरवाइज लर्निंग मॉडल. तो वहां पे क्या कर रहा है? ह्यूमन मशीन को असिस्ट करता है. इट गिव्स इट द पैरामीटर्स, इट गिव्स इट द डेटा, गिव्स द मशीन द कंस्ट्रेंट्स. Then there are machine assisting humans also, like robot carrying a glass of water for you, as you see in the nice picture here. तो इस तरह के collaboration होंगे. ठीक है, जैसे हमें पता चलता है. Then one more development going on in this direction is emotions. तो emotions पे अभी काम चल रहा है. कोई बोलेगा नहीं हुआ है. Yes, we don't have any concrete in this yet, but yes, data heavy, AI heavy companies are doing a lot of work in this. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इमोशंस पे वो लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. देयर इज ऑलमोस्ट $41 billion budget appointed by companies investing in sense based learning, emotion based learning, and the key people are Amazon, Google, Facebook in this, and also Apple. They are in their race to decode their humans users emotions. तो इमोशन कैसे होगा? यस, तो हाउ डज इट डू? जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस का मैंने एक आइडिया बताया कि कोई मूवी लॉन्च होती है तो कुछ लोग
उसके बारे में लिख रहे हैं ट्विटर पे, अलग अलग लोग लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है अच्छा नहीं था, कोई बोलेगा वेरी नाइस, है ना. These kind of people will write their own comments. So these millions of comments that are being generated on Twitter or LinkedIn or these kind of things, this data is passed to sentiment analysis models. Or these sentiment analysis models will tend to see the general emotions of the user. कि जनरल मार्केट में क्या है, अप्रोर है, गुस्सा है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या है. इलेक्शन के लिए भी हम ये करते हैं, इलेक्शंस के लिए भी इस तरह का सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाता है, मूवीज के लिए भी किया जाता है. सो दिस इज वन डायरेक्शन वी आर गोइंग इनटू द इमोशनल मॉडल्स. इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी कॉम्प्लेक्स एज आई सेड, बट इमोशंस के परसेप्शन के फील्ड में भी ज्यादा काम हो रहा है इस पर. ठीक है. कोलैबोरेशन वी सॉ वन एस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर, इमोशंस, shift from data heavy IQ heavy interactions to deep emotional guided experiences. तो इट में फ्यूचर में क्या होगा, डेटा बहुत हैवी लगता है अभी मशीन को ट्रेन करने के लिए, दैट में रिड्यूस एंड मशीन में बिकम मोर इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंट. So they may be able to take more decisions based on emotional guidance available or emotional data available, or simulating emulating humans behavior by looking at humans, by looking at let's say 100 1,000 pictures दिखाया किसी मशीन को in different emotions, faces of humans, that may help the machine to learn some example. ठीक है, इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, हो रहा है काम. Then what are the dangers with emotions? ठीक है, we saw some of these funny examples, we may have heard or seen some of these funny examples in the movies as well, but there are some definitely implications along with emotional analysis. So as I said, there is a lot of big budget allocated by companies like Amazon, Google, Facebook, and Apple, and they are racing to decode the emotions. So what are the dangers lying with this approach? हमारे लिए क्या नुकसान है, या overall what can go wrong? So one thing difficult is, can you credibly justify reading emotional clues for betterment of using experience? So you can work in the emotional field, but how does it justify the betterment of user experience? That is one question should be posed or is posed to these companies. You will analyze emotions, you are doing a lot of progress in this, but how will it help user experience? That is first question. Because user may not want to share his emotional data. When you read the second point, you will understand. Has the user given explicit permission to analyze their emotions? Very important. तो देखो, हम सब यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं. These names that I talked of, these 4 5 names, Amazon, Google, Uber, Facebook, these are everyone's names, है ना. They are global billion, multi-billion dollar, multi-trillion dollar companies all over the world. Most of us use them. Do we know that our data is being analyzed? Do we know our emotions are also being analyzed? Do we know our every click is being analyzed by them? Some will say yes, we know, but most of the users will say no, we don't know this, we don't know that. तो कोई बोलेगा क्यों पता नहीं है आपको, तो we generally sign the user privacy policies, right? We sign the agreements, but do we read them? No, we don't read them. हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, एक लंबा सा आता है आई एग्री पॉलिसी, हम स्क्रॉल करते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, राइट? वी डोंट हैव टाइम टू रीड बेसिकली 10 पेजेस. और ये सभी प्रोडक्ट्स के साथ मोस्टली होता है, एंड बेसिकली नो वन रीड्स देम. तो इफ नो वन रीड्स देम, देन वी आर साइनिंग ब्लाइंडली, इजंट इट? आपको पता ही नहीं है फिर कि देन आपके डेटा को वो क्या भी कर सकता है. सपोज आपका फोन पड़ा है और आपका सीरी सुन रहा है, एंड इट इज रिकॉर्डिंग ऑल योर वॉइस, एंड देन इट हैज ऑल दिस, सेंडिंग ऑल दैट डेटा टू एप्पल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स एवरी सेकंड और एवरी मिनट. द फोन इज डूइंग दैट. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज आल्सो. सो डू वी हैव द परमिशन, डू वी हैव द क्लैरिटी? यूजर्स को पता है क्या ये, या फिर ये परमिशन हुआ है क्या? एंड द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कंटेक्स्ट, which may be more dearly difficult for users to give permission, and it's not just about explicit. So first danger is, how does it justify, how learning emotional uh, data from the users using AI will help user experience? That is first question. Second danger or question is, have user given explicit permission to analyze their emotions? तो आप हंस रहे हैं और एक
जापान में रेस्टोरेंट के सामने जाते हैं, एंड द रोबोट इज टेकिंग योर ऑर्डर एंड इट इज सर्विंग यू द फूड आल्सो. बेसिकली जापान हैज सच रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी. तो इफ दैट हैपेंस, दैट रोबोट इज एनालाइजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस. आप गुस्से में हैं, आपको भूख लगी है, आप चीख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप ऑर्डर देते देते आपके कलीग से बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, ये सारी इमोशंस एंड एवरीथिंग द रोबोट इज एनालाइजिंग. सो हैव यू गिवन दैट परमिशन, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, दैट्स सेकंड डेंजर. थर्ड इज, कैन दे रिवोक दिस परमिशन. ये सबसे डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यू नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो हाउ टू रिवोक दैट. आपको कोई बोलेगा चलो ये फेसबुक का ऐसा ऐसा है तो मैं बंद करता हूँ, बट then you have to maybe shut down the account, right? But still they have data. They may still have your data. Then why are we not able to quit also? Because user has done a lot of investment now. कोई ने किसी ने Facebook यूज किया है 4-5 साल, किसी ने Instagram यूज किया है, तो डेटा बनता है. Now these companies are also very smart in terms that they are not creating their data. They are asking users to create their data. Like Quora पे users data बनाते हैं, LinkedIn पे users data बनाते हैं, Stack Overflow पे programmers ही लिखते हैं सारा data, right? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फेसबुक पे भी लोग वॉल पे अपने जाके लिखते हैं, तो ये डेटा भी यूजर्स बना रहे हैं, बट दे आर क्रिएटिंग इट ऑन द फेसबुक प्लेटफॉर्म विच इज बीइंग यूज्ड बाय फेसबुक explicitly for all kinds of analytics and maybe monetary and even fraudulent purposes which users don't have any knowledge of. Even if they have knowledge of, they don't have absolute clarity, and even if they have absolute clarity, can they revoke these permissions in terms of emotion? So these are some of the dangers that we are getting into when we sign blind agreements with AI companies. This may be some of the pitfalls where we need to take a caution and look back whether we are being whether our data is being used for the right purposes. But then we have to question this. Okay. Then some more interesting part about AI is the common sense. Okay. Common sense is very, very uncommon in computers, also in humans mostly. But then humans are not the topic of today. We are talking about AI. So we need computers with some common sense. What is common sense? Common sense में बहुत सारी चीजें आपको commonly पता होती हैं, जो कंप्यूटर को नहीं पता, है ना? तो इट यू नीड टू बी एबल टू ट्रेन कंप्यूटर्स विद दैट. तो अभी कैसा है, पूरा डेटा हैवी है. तो अगर एक 10 पिक्चर्स को करेक्टली प्रेडिक्ट करना है, समझो, तो 10 मिलियन पिक्चर्स आपको यूजर कंप्यूटर को देने पड़ते हैं. इतना स्क्यूड रेशियो है. 1 मिलियन इज टू 1. 1 मिलियन इज टू, मतलब सिंपल ट्रेनिंग मॉडल के लिए समझो 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स लगते हैं किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए. देन दिस इज गोइंग इनटू अ वेरी डेटा हैवी डायरेक्शन. डेटा हैवी डायरेक्शन क्या होता है? डेटा हैवी डायरेक्शन भी है, द डेटा विल इंक्रीज मोर एंड मोर for the computer to analyze, and the computers are able to come up with very short output or very less productivity based on the data. ठीक है, तो we need computers which are smart. We need computers which have more common sense, you know, which can do more EQ based analysis and not just basically data heavy. They are relying less on the bottom up big data approaches, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, डेटा बेस होता है, देन डेटाबेस के ऊपर डेटा वेयरहाउसेस होते हैं, डेटा लेक्स होते हैं, एंड बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो ये जब सारा बिग डेटा एनालिसिस इंजन में जाता है, एंड देन दिस मशीन्स लर्न ऑन दिस डेटा एंड देन गिव प्रेडिक्शंस टू द कस्टमर्स. दिस इज टिपिकल मॉडल. बट इस केस में क्या होता है, बॉटम इज वेरी बिग with a lot of data and the top is very light, as in the machines are very less productive. It should be more, it should be changing soon. We need more efficient robot reasoning, we need ready expertise, and we need some common sense with the machine. Okay? The future will be about less data and not more actually. तो इस डायरेक्शन में भी काम होगा, अभी हो रहा है धीरे धीरे. So that data dependency becomes less and the machines becomes more smart. Machines to become less intelligent, less artificial and more intelligent. ठीक है, रिजेंबलिंग हाउ ह्यूमंस अप्रोच प्रॉब्लम्स. तो मैंने जैसे बताया पहले कि ह्यूमंस कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं. देयर आर 1000 थिंग्स वी अंडरस्टैंड एंड वी आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट देम. वी क्विकली सी एंड वी अंडरस्टैंड बट वी आर नॉट नेसेसरली एबल टू राइट अबाउट इट. तो मशीन शुड बिकम स्मार्टर. देन बिजनेस एंड एथिकल इश्यूज बाय डेटा हंग्री सिस्टम्स. सो डेटा हंग्री सिस्टम्स मतलब क्या है, वही है, जो आपको छोटा सा आउटपुट चाहिए तो आपको पहले 10 मिलियन डेटा पॉइंट्स मशीन को देने. इट्स अ डेटा हंग्री मशीन, इट्स अ डेटा हंग्री सिस्टम, बिकॉज अदरवाइज विदाउट दैट मच डेटा इट कैनॉट गिव यू दैट आउटपुट करेक्टली.
So it's a very poor progress in machine learning. Okay, then Project Loon. Just one example here that this is also by Alphabet, or you can say by Google. So Google has created this new AI process. It consists of giant balloons flying in the sky all over the world. And all these balloons connect to each other and establish a network and provide high-tech Wi-Fi or network connectivity to remote places. Okay, it's called as Project Loon. It is very powerful and it is a very powerful application of AI. It basically mimics Gaussian processes technically, follows probabilistic models, and it can deal with uncertainty. So uncertainty क्या है? बारिश है, कोई event है कि कोई bird टकरा गया. There are lots of other things that can go wrong. So these balloons can take care of that, all of that, and serve internet to underserved regions of the world by using these Wi-Fi balloons. Stratosphere में वो घूमते हैं. So this is one giant, great example of AI-based project by Google already. This is just one. They have done a lot actually. And I think with that, we are good. The revolution is coming. And that's it. Thank you.